Hello students of class 4th. Welcome to your English class बच्चे. So children, this is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. Children, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7 of your Roots and Wings, that is Brave Rani Lakshmibai. Okay, yes. The name of the chapter is Brave Rani Lakshmibai. Fine? Okay. So children, this video is going to be the part 1 in which I will explain the story. Fine? In this video, I will explain this chapter, and then in the next video, I will discuss the exercises. Alright? Okay. So before starting this chapter, we are having a short exercise, that is get set. Before starting this short exercise, let me ask you one question. Can you tell me some name of some freedom fighters? Yes, they are Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, right? Rani Lakshmibai, Bhagat Singh. Yes, they all are the freedom fighters who fought for our country, right? Yes, you must have heard about that. Yes, and we are having two national festivals, that is Republic Day and Independence Day. है ना? Which you celebrate in your school also, right? Yes. Okay, now come to the gate set. This short exercise. See, on 26 January every year during the Republic Day celebrations, some children are given special awards in New Delhi for acts of bravery. The given picture will remind you of these awards. Okay, in your school also you must have seen that, or you must have got that award also in the Independence Day or Republic Day. Okay, your principal sir or your director, managing director sir will give you awards for your bravery or for your achievement. Okay, on this day children get awards. Okay, yeah, for their achievement. So you must have seen in your school also. In the same way, in New Delhi, children जो है वो क्या होते हैं उनको, in the same way in New Delhi, Prime Minister also gave awards, okay, to such children who have done some bravery act or some for their achievements. Okay, yeah, you can see the picture here. This is a picture of that moment. As you can see here, they are gathering. Fine, yes. Okay, now see here it is given, some questions are given. See the first one. What is this award called? Here the name is asking that जो award दिए जाते हैं, what is the name of that award? Then your answer will be National Bravery Awards. Alright, it will be, wait, just wait, it will be National Bravery Award, NATIONAL, National Bravery Awards, AWARDS. Fine. Okay, and the next one it is asking who gives these awards to the children? ये जो awards है वो कौन देता? Then your Prime Minister. So your answer will be Prime Minister of India. Yeah, or you can write in the short also PM of India. Fine. If you want to write the full form also, then you can write it, or you can write the abbreviated form also, PM of India. Yes. Fine. In the third one, how are the children chosen for this award? Then your answer will be they are chosen for bravery from all over India, India, by COMMITTES committees in the states, STATES states, and at the center, CENTRE, then full stop. Alright, so we have done this one. Now coming to the story. So let's move. Read and enjoy. Some people show great courage as they stand up for what is right and fight for justice. Let us find out how Mala fought some criminals single-handedly. One day, she was even compared to Rani Lakshmibai and awarded for her bravery in school. जैसे कि मैंने आपको बताया, as I have told you that many of the children get award for their bravery on the day of Republic Day or on the day of Independence Day और on any other day also. ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे का वेट किया जाए. स्कूल में बच्चों को भी दी जाती है स्कूल में, तो ऐसे भी, एंड या फिर कहीं स्टेट लेवल पे मिलती है, हाँ सेंट्रल लेवल पे मिलती है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि इन नेशनल डे का इंतज़ार किया जाए. आपको ऐसे भी मिलते हैं, बट ऑन दिस डे जो बहुत ही मतलब बहुत ही स्पेशल जो अवार्ड्स होते हैं आपको, स्पेशली इन दोज डेज
दे यूज टू गेट. ओके, जैसे स्कूल में, आपने स्कूल में भी देखा होगा ना कि आपके स्कूल में अवार्ड्स दिए जाते हैं, आपको भी मिले होंगे अवार्ड्स, है ना. यस. Then in the same way here there is a story about a girl whose name is what? That is Mala. Okay. Yes. And she also got award for her bravery. And we will come to know in about that, how she get it, what she did in her school. Okay. क्यों उसे अवार्ड मिला, क्या उसने ऐसा किया था. And she was even compared to Rani Lakshmibai because she fought some criminals single-handedly on one day. What she did, she fought with the criminals. So उसने क्या किया था, क्रिमिनल से फाइट की थी. क्यों की थी, we will come to know in the story. And she was compared to Rani Lakshmibai also. सोचो ऐसा कुछ किया होगा तभी तो इसे रानी लक्ष्मीबाई का दिया जा रहा है टैग, है ना. Yes. Okay. Now let's start the story. Mala ran all the way back home from school. As she entered the house, her mother hugged her and her grandmother kissed her. See, there is a girl whose name is Mala. As you can see in the picture also, she is Mala. Okay. And she is her mother, Mala's mother. ये माला की mother है. And she is her grandmother. Okay. Yeah. And when Mala came from her school, then they both hugged her, grandmother and mother. Fine. uh, in the same way it also happens with you also. Whenever you come from your school, then your mama do love you, right? She just kisses you, she just hugs you, right? तो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, स्कूल से बच्चे आते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा. इन द सेम वे माला was also got a hug and a kiss from her parents. Okay. Now what she did, see what she did. Look at this medal that I have got. Principal mom gave it to me in the morning assembly and all the children clapped for me. Now see, Mala is saying there, look at this medal, mama and the grandma. See what I have got from my school today. She is showing her medal, okay, which she got in her school. Okay. And she is telling that she was given by her principal ma'am and in the morning assembly. Okay. And all the children clapped for that. And when she was getting this medal, then all the children were clapping. जब इस माला को मेडल मिल रहे थे तो सारे बच्चे क्या कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे. बच्चे, I will explain in both languages, okay, in English as well as in Hindi, so that everyone can understand this. Fine. Because some of you can understand in English, some of you don't understand in English, they need Hindi language also. They used to comment me that, ma'am, please explain it in Hindi also. That's why I'm using both languages. Fine. Okay. Now we come to the next paragraph. Her mother smiled. That is amazing. You had told us that you would get it today. What did your principal say in the assembly? And then when her mother saw that medal, then what she said, that wow, this is wonderful. And you had told about this that you will get something today. तुमने बता रखा था कि हाँ तुम्हें आज कुछ अवार्ड मिलने वाले, but we didn't know which award you will get. That will be medal or certificate or something like a gift. Okay. Yes. And her mother further asked from Mala that what did your principal ma'am say in the assembly. और जो तुम्हारी प्रिंसिपल मैम है, what she said in the assembly for you, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या बोला. Okay. Yes. Now the next paragraph, Mala's eyes shone with excitement. Well, she said that this medal is for being a brave girl. I fought with two men all alone and got back Nidhi madam's purse from them. Then when her parents asked about her achievement, about the words which principal ma'am said, then what she said, she was full of excitement. बच्चे क्या होते हैं ना, एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी कहानी बताने को, खासकर जब उनकी कोई अप्रिसिएशन करे या उनके बार या उनको कुछ अवार्ड मिले, गिफ्ट्स मिले, तो वो बड़ा खुश होकर बताते हैं अपने पेरेंट्स को. बड़ा उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी होती है ना. इन द सेम वे माला वॉज ऑल्सो फुल ऑफ एक्साइटमेंट. एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग दैट ये जो मेडल है, दिस मेडल इज़ फॉर बीइंग अ ब्रेव गर्ल. ओके, जो मेडल मुझे मिली है, दैट इज़ फॉर द ब्रेव गर्ल, फॉर बीइंग अ ब्रेव गर्ल. बिकॉज एंड व्हाट वाज द रीज़न, दैट आई फॉट विथ टू मेन ऑल अलोन. एंड जो माला है उसने क्या किया था, अपनी उसकी कोई टीचर है, दैट इज़ निधि मैडम, और उनके ना कुछ क्रिमिनल्स जो थे, कुछ जो थीफ थे, वो क्या कर रहे थे, इनकी पर्स को, दे वर स्नैचिंग हर पर्स.
निधि मैडम्स पर्स. ओके, एंड व्हाट शी डिड, शी फाउट, एंड जो ये गर्ल है माला, शी फाउट विद देम. With whom? With the criminals, with the thieves. Okay, yes. And then she told the whole story to the children that when two men hit Nidhi mom, she fainted and they snatched her purse and tried to escape on their motorcycle. And then she further said that, Mala further said that, और प्रिंसिपल मैम ने क्या बताया सारे बच्चों को ना, पूरी स्टोरी सुनाई दैट जब निधि मैम को क्रिमिनल ने हिट किया और उनके पर्स को स्नैच कर रहे थे, देवर स्नैचिंग हर पर्स, छीन रहे थे उनके पर्स को, देन और वो छीन कर भाग रहे थे. देन व्हाट, देन मैंने क्या किया था, उन दो आदमियों को मैंने क्या किया था, उनसे फाइट की थी. प्रिंसिपल मैम टोल्ड एवरीवन दैट आई थ्रू माई स्कूल बैग एट द मैन एंड दे फेल फ्रॉम देयर बाइक. और प्रिंसिपल मैम ने सबको बताया, सारे बच्चों को, कि मैंने क्या किया था ना, कि अपने स्कूल बैग को जो उन दो मैन पर, उन पर फेंका, उन क्रिमिनल पर, और फिर जब उन पर मैंने अपने बैग को फेंका तो वो अनबैलेंस्ड होकर क्या हो गया, नीचे गिर गया अपने बाइक से. आई इमीडिएटली shouted for help and many people gathered there. The two men were finally caught. All the teachers and students clapped for me. Principal mom also said that I am like Rani Lakshmibai. एंड देन जो प्रिंसिपल मैम है ना, उन्होंने बताया सभी को कि जब मैंने ऐसा कि जब वो क्रिमिनल जो बाइक से गिर गए, देन मैंने फिर सबको, मैंने ज़ोर ज़ोर से फिर हेल्प के लिए मांगा, सबसे हेल्प के लिए चिल्लाया. आई शॉटेड फॉर हेल्प एंड देन मैनी पीपल गैदर्ड देयर, मैनी पीपल केम देयर फॉर हेल्पिंग मी. एंड देन फाइनली दोज टू थीव्स वर काउट. ओके, फिर एट द लास्ट जो दोनों चोर थे वो पकड़े गए. एंड then when the principal ma'am finished her story about me, then all the teachers and students clapped for me. सभी ने मेरे लिए clapping की. And principal ma'am also said that I am like Rani Lakshmibai. और प्रिंसिपल मैम ने मुझे क्या बोला है कि मैं रानी लक्ष्मी बाई की तरह हूँ. एंड शी वॉज सो हैप्पी व्हेन शी वॉज सेइंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, अब किसी को अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स का, किसी भी फ्रीडम फाइटर का टैग दे दिया जाए तो सोचो कितनी प्राउड की बात है, नहीं? हाँ. Okay. Coming to the next paragraph. Grandmother laughed and said, "Oh, my brave Mala is called Rani Lakshmibai now." And then grandmother ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब हमारी जो माला है, she will be called Rani Lakshmibai. अब से वो क्या, रानी लक्ष्मीबाई कहलाएगी. Oh wow, that's great. Yes, grandma, I read about her last year. But but do tell me more about Rani Lakshmibai. Grandma said, sure child. And then फिर जो माला है, she was telling to her grandma that I read about her last year, मतलब I read about Rani Lakshmibai last year in my previous class about her, but I want to know more about Rani Lakshmibai. यहाँ माला बोल रही है कि मैंने तो उनके बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था, बट मुझे ना उनकी और भी उनके बारे में जानना है, उनकी और भी उनकी स्टोरी जाननी है, कि मुझे सुननी है. देन ग्रैंड माँ ने क्या क्या, यस बच्चे, sure, obviously I will tell you. Okay, now moving to the next page. Mala added, when the incident happened, I was very afraid for a moment. The man could have harmed me, but I overcame fear and acted bravely. Then Mala told that जब मैंने वो क्रिमिनल को हिट किया था अपने स्कूल बैग से, and then I was shouting for the help, then I was very much afraid that कहीं ऐसा ना कि वो मुझे harm करे. But आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, आई जस्ट ओवरकेम माई फियर एंड एक्टेड ब्रेवली. बट मैंने अपनी डर को पीछे छोड़ा, एंड देन मैंने एज अ ब्रेव गर्ल आई जस्ट फॉट विद देम. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दे सैट डाउन कंफर्टेबली ऑन द सोफा. Mala's mother got busy in the kitchen. Meanwhile, grandmother explained, Rani Lakshmibai was one of the most important warriors of India's first struggle for independence against the British rule. Now what happened, grandma and Mala sat on the sofa, and Mala's mother, she went to the kitchen, okay, for having lunch, for preparing the lunch. And then her grandmother started telling the story about Rani Lakshmibai, that she was one of the most important warriors of India's first struggle. ऐसा तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे वॉरियर्स थे जिन्होंने फाइट किया था इंडिपेंडेंस के लिए, बट रानी लक्ष्मीबाई उनमें से, शी वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनमें से एक थी, वो जो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट थी उनमें से. बिकॉज बीइंग अ गर्ल टू बिकम अ ब्रेव, इट्स रियली अमेजिंग ना, इट्स रियली अप्रिशिएबल, है कि नहीं? देन
and she was born on the 19th November 1835 at Pune and named Mani Karnika. और जो रानी लक्ष्मीबाई है, शी वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर. आज है आपका 3 नवंबर. इट मीन्स कि उनका जो बर्थडे है ना रानी लक्ष्मीबाई का आने वाला है 19th नवंबर को. Yes, just do remember it. And she was born at Pune and she was named Manikarnika. Her childhood name was Manikarnika. Her father was a court advisor and her mother was a scholarly woman. जिनके फादर थे वो क्या थे वो? He was advisor. Advisor means what? Those who give suggestion, those who give advice. Okay. She lost her mother at a very early age. When she was a small kid, then her mother was died. Okay. Her father encouraged her to learn to ride elephants, horses, and to use weapons. She grew up with Nana Sahib and Tantya Tope. And जो उसके उनके फादर थे ना, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया था, बचपन से ही उनको he made her learn riding elephants, horses and how to use weapons. उन्होंने उनको सिखाया बचपन से ही. एंड और जो ये थी रानी लक्ष्मीबाई, वो किन के साथ पढ़ी हुई थी? नाना साहिब एंड तांत्या टोपे. ओके, यस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Nana Sahib and Tantya Tope, they were also the famous face. Okay, they were also the famous people. Mala looked surprised, but when did she fight with the British soldiers? And Mala was very much in excitement to know about Rani Lakshmibai, and she just asked, हम ग्रैंडमा मुझे ये बताओ ना कि उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर से कब फाइट की थी. देखो ग्रैंडमा ने क्या कहा, वेट डियर, जस्ट वेट, मैं बताऊंगी. आई विल टेल यू मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई. शी वॉज मैरिड टू द रूलर ऑफ झांसी, Raja Gangadhar Rao, in 1842 and was called Lakshmibai. She gave birth to a son who unfortunately died. Then the king adopted Damodar Rao as his son. Due to his own son's death and ill health, Raja Gangadhar Rao also died in 1853. Rani Lakshmibai was just 18 years old then. She acted courageously and took up her responsibility. And when Rani Lakshmibai was married to the ruler of Jhansi, and his name was the Raja Gangadhar Rao. She was married to Raja Gangadhar Rao in 1842, and then after getting married with that person, with that king, she was named as Lakshmi Bai. And after that she gave birth to a son, but unfortunately that her son was died. Okay, then then the king adopted a son. Okay, then the king adopted a child whose name was Damodar Rao. And जब लेकिन जो अपना बच्चा होता है ना, उसका जो दुख था, उसका जो ग्रीफ था, उसके कारण ना दामोदर राव क्या हो गए, वो थोड़ा स्ट्रेस तो हो ही जाना है. अगर अपने किसी के बच्चे का अगर डेथ हो जाए तो कितना अफसोस होता है ना, कितना सैडनेस आ जाती है. तो जो गंगाधर राव थे वो काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगे, एंड जिनके कारण उनका हेल्थ जो था वो क्या हुआ, एंड देन ही बिकेम इल आल्सो. ही वाज हैविंग इल हेल्थ, and then after he was also died in 1853. And then Gangadhar Rao was also died in 1853. And then after Rani Lakshmibai was just 18 years old. And at that time जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो just 18 years की थी. But at that age, उतनी कम एज में भी उन्होंने she just took up her all the responsibilities. Okay, yes. And she was very much courageous girl. She was very much brave girl. That's why she did all these things. ओके, एंड उनके बारे में ना देयर इज़ अ सेंटेंस अबाउट हर दैट, आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी की रानी थी, है ना. ये इस तरह के कुछ आपको सुनने को मिले होंगे लाइन्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट, राइट. यस. ओके, नाउ बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल. अगर मेरे वीडियोज़ आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल है, इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. तभी तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगी ना, आपके लिए वीडियोस मैं बना सकूंगी और आपकी स्टडीज़ ईजी हो पाएगी. ओके, यस. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पैराग्राफ. द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द लीगल हायर एंड वांटेड टू टेक ओवर झांसी. दे ऑर्डर्ड रानी लक्ष्मीबाई टू लीव झांसी. सी हियर इज द पिक्चर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई. ओके, सी, she is Rani Lakshmibai, and here
ये जो बच्चा है ही इज़ दामोदर राव, जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था। ओके, और देखो वो जब फाइट कर रही थी, देखो कैसे उन्होंने अपने पीछे उसे बांध रखा है दामोदर राव को, सोचो। और देन वो हॉर्स राइडिंग करके सारे ब्रिटिश सोल्जर से वो फाइट कर रही हैं। कितना ब्रेव गर्ल है कि नहीं? यस। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने दामोदर राव को क्या किया, उन जैसे कि क्या होते हैं ना कि जो किंग होते हैं, और जो फिर अगर अगर किंग पहले जब अगर किंग है जिंदा, देन उनकी तो सारी उनके अंडर में सब कुछ है, ठीक है, उनकी जो भी एम्पायर है। एंड देन व्हेन दे डाई, ओके, व्हेन द किंग डाई, देन व्हाट हैपन, जो भी उनकी होगी प्रॉपर्टीज़ हुई, जो भी उनके वेल्थ हुए, जो भी उनके एम्पायर सारे क्या होते हैं, वो उनके सन को दे दी जाती थी। ओके, पहले ही अब हमारे टाइम में क्या, हमारा जब इंडिया वो डेमोक्रेटिक हो गया, अब हम वोटिंग करते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। राजा के बाद कौन राजा बनता था, उनके जो भी अपने बच्चे होते थे वो राजा बनते थे। तो यहाँ ना जब गंगाधर राव की डेथ हो गई, तो फिर रानी लक्ष्मी, तो फिर ब्रिटिश रूलर को लगा कि अब उसके बाद जो है ना, जो दामोदर को जिनको अडॉप्ट किया गया, अब वो शायद जब बड़ा होगा तो वो इस पर रूल करेगा, झांसी पर। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये अपना बच्चा नहीं है, ही इज़ अडॉप्टेड, ही इज़ नॉट योर ओन चाइल्ड, सो वी विल नॉट गिव यू द परमिशन। अब उनको क्या कहा गया कि ये जो लीगल हायर है वो उनको नहीं ग्रांट की जाएगी, और फिर जो झांसी है वो वापस ले ली जाएगी। ओके, तो फिर इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने फाइटिंग की है उनसे। देखो क्या होता है, दे ऑर्डर्ड रानी लक्ष्मीबाई टू लीव झांसी एंड ग्रांटेड हर एन एनुअल पेंशन। और उन्होंने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई को बोला कि झांसी छोड़कर जाने को। ओके, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा था, और कहा जब आप झांसी छोड़कर जाओगे तो हम आपको पेंशन देंगे, मतलब आई विल गिव यू सम अमाउंट फॉर दैट। ओके, आपको हर कुछ ड्यूरेशन पे आपको अमाउंट दे दी जाएगी, एंड देन ताकि उनकी सर्वाइवल के लिए। ओके, बट शी रिफ्यूज टू गिव अप झांसी। नाना साहेब, तांत्या टोपे एंड मेनी अदर्स ज्वाइंड हर टू फाइट द ब्रिटिश। और लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या किया, वो रिफ्यूज़ कर गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं झांसी नहीं छोड़ने वाली हूँ, झांसी विल बी इन अंडर माई कंट्रोल। ओके, विल बी अंडर माई कंट्रोल, सो आई वॉन्ट लिव इट। And then what happened? Nana Sahib, Tante Tope, and many others also joined to fight the British. They नाना साहेब, तांत्या तोपे एंड और भी जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, दे हेल्प्ड रानी लक्ष्मीबाई एंड दे also fight with the British soldiers. And then many women also supported her. They were given military training to fight the enemy. And जो women थी उन्होंने भी फाइट की रानी लक्ष्मीबाई के लेकर। उन्होंने ट्रेनिंग ली, जो बाकी women थी वहाँ के वहाँ की झांसी की, तो उन्होंने ट्रेनिंग ली फाइट करने की, मिलिट्री ट्रेनिंग लिया। एंड देन दे आल्सो सपोर्टेड रानी लक्ष्मीबाई। ग्रैंड मदर स्माइल, यस जस्ट लाइक यू फाउट। एंड देन जो ग्रैंड माँ उन्होंने बोला कि जैसे तुमने ये फाइट की ना उन क्रिमिनल से, माला, in the same way Rani Lakshmibai also fought with the British soldiers. That's why your principal ma'am has given you the title of Rani Lakshmibai, क्योंकि तुमने ना रानी लक्ष्मीबाई की तरह फाइट किया था। ओके, जैसा तुमने किया वैसे रानी लक्ष्मीबाई ने भी किया था, तो तुम दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ है। आप छोटे हो तो आपने इस तरह की फाइट की, सो दैट्स वाई यू आर कॉल्ड रानी लक्ष्मीबाई। ओके, ओके। The two men empty-handed when the British attacked Jhansi. Rani Lakshmibai fought them bravely. जैसे तुमने खाली हाथ ऐसी उन क्रिमिनल्स के साथ फाइट किया था ना, और उनको हरा डाला। देन इन द सेम वे रानी लक्ष्मीबाई आल्सो फाउट विद देम विद द एम्प्टी हैंडेड, एंड शी अटैक एंड शी फॉट देम ब्रेवली। ओके, जब ब्रिटिश ने उन पर झांसी पर अटैक किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ा ही ब्रेवरी के साथ उनसे फाइट किया था। Her army fought for about 2 weeks, but she had to escape on her horse Badal with her son Damodar Rao securely tied to her back. She went to Kalpi and finally to Gwalior. She sacrificed her life for the freedom of Jhansi. And in this way, and in this struggle, in this fighting, जो उनके आर्मी थे उन्होंने भी फाउट किए 2 weeks तक। देन आफ्टर ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, शी जस्ट escaped from there on the horse, and the name of the horse was बादल। घोड़े का क्या नाम था, बादल नाम था, यस। एंड शी एस्केप्ड विथ हर सन, फिर वहाँ से भाग निकली, कहाँ से, जहाँ फाइटिंग हो रही थी। एंड देन और किसके साथ, विथ हर सन दामोदर राव। एंड देन उन्होंने क्या किया, शी सेक्युरली टाइड टू हर बैक, जैसे आपने पिक्चर में देखा ना, उन्होंने पीछे बांध रखा अपने बेटे को, यस, इन द सेम वे। एंड देन शी वेंट टू कालपी एंड फाइनली टू ग्वालियर। एंड देन
She sacrificed her life. इस तरह से लड़ते लड़ते she just sacrificed her life for the freedom of Jhansi. Okay, yes. Now in the last paragraph, what a brave woman, Mala said. Then Mala ने क्या कहा, अरे वाह कितनी बहादुर वो थी ना. Grandma, you are right. All women should be brave like her. Mala's mother called out. And then grandma ने क्या कहा कि yes, she was brave and you are right. एंड ऑल वीमेन शुड बी ब्रेव. सारे वीमेन को क्या होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए. ऐसा ना हो कि हम तो वीमेन हैं, हम तो गर्ल हैं, हमें ब्रेव नहीं होना चाहिए, हम डरपोक होना चाहिए. नो, इट शुड नॉट हैपन. ओके, यस. Mala's mother, now her mother is calling for the lunch. Mala, you have your lunch now, it's ready. Then her mother is calling, just Mala, come and have your lunch because it is ready. Mala hugged her grandmother and said, thanks for the story. You are the best grandma in the world. And then Mala, when she listened all the stories, then what she said, she just hugged her grandma and then she said, thank you grandma for the story. And you are the best grandma, you are the great grandma in the world, you are the best. बच्चे कहते ना आप सबसे बेस्ट हो. And the same way she said. Then grandma smiled. I am so proud of you, Mala. And then grandma ने कहा I am so proud of you, Mala, because you have also fought like a Rani Lakshmibai and you are also now called as Rani Lakshmibai. Okay, so in the now here the story finished. All right. Okay, so in the next video we will do the exercises, that is read and understand, questions are जो भी है. In the next video we will do it. So have a good day and bye bye. Now do subscribe my channel and hit the like button. Bye bye बच्चे.